अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है दिस इज़ फॉर नाइन्थ क्लास। द लेसन इज़ लेसन नंबर 19. This is a story of an elephant and the elephant owner. The lesson is titled as Moti Guj, the mutineer. Let's know who a mutineer is. Mutineer means somebody who goes against the law, who does not follow the law, who's a rebel, somebody who goes against the laws or who does not abide by the laws. तो उसको इंग्लिश में रेबल कहते हैं या म्यूटिनियर कहते हैं। तो मोती गज, ये इसका मोती गज इज़ actually the name of the elephant, and the mutineer means the mutineer Moti Guj. I'll read out this lesson for you, and you will, if you have texts before you, and you come on the page 90 of this textbook, and we will talk about, and I'll read out two or three paras, and then we'll try to explain this to you, and we'll see the difficult words that come across while reading this lesson, and we'll discuss the message that the writer wants to say. uh, this lesson is, this writing is by Rudyard Kipling. Who was Rudyard Kipling? Actually, he's a Nobel laureate who wrote novels, poems, and short stories. This is one of the short stories that we are talking about, mostly set in India and Burma. Today, Burma is known as Myanmar, and those stories that he actually wanted to convey, and the setting of the stories is mostly Indian, India and Burma. During the times of British rule, Rudyard Kipling actually was in the East Indian Company. Rudyard Kipling was as an employee, and he was also a writer, and he has sketched the life of the Indians. So let's directly move without beating bush. We'll directly move to the lesson. I'll read it out for you, and you just watch this video till the end, and we'll see how he has taken the issue of village site, and the uh, and a contractor who was given the job, or who was assigned the job of clearing and the forests. Let's see. Once upon a time, there was a coffee planter in India who wished to clear some forest land for coffee planting. When he had cut down all the forest trees, stumps still remained. The planter hired elephants for stump clearing. The very best of all the elephants belonged to the very worst of all the drivers or mouths. And this superior beast's name was Moti Guj, which means the pearl elephant. It was the absolute property of his mouth. Disa means Disa was the person who was in possession of an elephant. Elephant's name has been called Moti Guj. Moti means pearl, and you see, Gaj is name was Moti Gaj, which means Gaj means elephant and Moti means pearl. Okay, he was the absolute property of his mouth, Disa. Disa was a foolish drunkard. When he had made much money through the strength of his elephant, he would get extremely drunk and give Moti Gaj a beating with a tent peg over the tender nails of the 4 feet. Moti Guj never tramped.
the life out of Disa on these occasions. He knew that after the beating was over, Disa would embrace his trunk and weep. He would call him his love and give him some liquor, which Moti Guj was very fond of. Okay. Moti Guj and Disa worked hard. Disa sat on Moti Guj's neck and gave him orders. Moti Guj rooted up the stamps for he owned a magnificent pair of tusks, which Moti Guj worked. Disa kicked him behind the ears and called him the king of elephants. At evening, Moti Guj would mix his 300 pound of green with a bottle of liquor. Disa would also take a share and sing songs between Moti Guj's legs till it was time to go to bed. Okay. Once a week, Disa led Moti Guj down to the river. Moti Guj lay on his side in the shallows while Disa rubbed him with a coir swab and a brook. Moti Guj never mistook the pounding blow of the brook or the smack of the coir swab that warned him to get up and turn on the other side. Then Disa would look at his feet and examine his eyes and turn up the corners of his mighty ears in case of sores. After inspection, the two would stand up, Moti Guj, all black and shining, waving a torn tree branch 12 feet long in his trunk, and Disa knotting up his own long wet hair. Okay, यहाँ तक आज पढ़ते हैं and let's explain. So, एक दिन की बात है. I'll translate it in Urdu, and similarly, we'll be using two languages, the Urdu and English as well. Once upon a time there was a coffee planter. एक दिन की बात है जब एक coffee planter wanted to plant coffee. यानी coffee is a tea, a breed of tree, and a coffee planter in India who wished to clear some forest land for coffee planting. This person actually wanted to plant the coffee baby plants, but while doing so, he had to go to clear the forests before planting the coffee plants. He had to clear the pre-existing plants, and this required a lot of labor. This required a lot of energy and man force. तो ये जो जंगलात क्लियर करने थे, इसके लिए फॉरेस्ट लैंड जो थी इसको पहले क्लियर करना था. यानी इसमें जो तने थे, ये जो 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 पेड़ पौधे थे उखाड़ने थे. उसके बाद ही ज़मीन को फिर से किसी दूसरी काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था. दैट मीन्स फॉर द कॉफ़ी प्लांटिंग. ठीक. व्हेन ही हैड कट डाउन ऑल द ट्रीज, जब इसने सारे वो प्लांट्स काट डाले, और उसके बाद द स्टम्प स्टिल रिमेनिंग. स्टेम मीन्स तना, यानी कशर पे वन गोड. यम गोड रूदमित अति टित, यानी when we cut a tree or a plant, the remainings, I mean the stem remains there, and that stem needs to be uprooted. इस स्टेम को अप्रूट करना पड़ता है ताकि उस जगह पे कोई जड़ रह ना जाए. उसके बाद ही उस पर दूसरी कोई फसल, कोई काश्त की जा सकती है. तो स्टेम्स मीन्स trunks. Okay, trunk is the base part of a plant. Okay, then the planter hired elephants for stump clearing. तो इस बंदे ने क्या किया, इसने एलिफेंट वालों को, यानी हाथी, जिनके पास हाथी थे, क्योंकि इनको अपरूट करना उस वक्त मशीन्स नहीं थी, इनको अपरूट करने के लिए फोर्स चाहिए, इनको अपरूट करने के लिए ताकत चाहिए, और ये ताकत इंसानों में नहीं, ये ताकत किसी जानवर से ही, जानवर का ही की ताकत इस्तेमाल की जा सकती. तो इसके लिए एलिफेंट्स को चुना गया कि ज़्यादातर हाथी इस चीज़ को कर सकते हैं. मतलब इतनी ताकत अगर है किसी जानवर में तो हाथी में, बेल में नहीं है, घोड़ू में नहीं है. तो हाथी का इस्तेमाल कर दिया गया ताकि
इन स्टम्प्स को क्लियर आउट करे, मतलब इन 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 तनों को जड़ से उखाड़ने के लिए हाथियों की ज़रूरत पड़ी. देन व्हाट हैपेंड? The very best of all the elephants belonged to a very worst of all the drivers. Mahouts. Mahout means an elephant driver. जो हाथी चलाने वाला होता है उसको माहौट कहते हैं. स्पेलिंग इज MAHOUT. माहौट. ठीक, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है माउट. द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल द एलिफेंट्स बिलोंग टू, ये जो अच्छे हाथी थे, जिनके जो बड़े मस्त साथी थे, मस्त हाथी थे, लेकिन उनके जो ओनर थे, उनके जो मास्टर्स थे, जिनकी पोजेशन में ये थे, वो अच्छे लोग नहीं थे. मतलब दे वर नॉट एक्चुअली अप टू दम. देयर वाज अ बैड कॉम्बिनेशन. गुड elephants had not good drivers, so bad drivers with good elephants. This was the case. Then he says ऐसा ही केस था. And this superior beast's name was a Moti Guj. एक ऐसा ही ड्राइवर और एक ऐसे ही एलिफेंट की दास्तान यहाँ पे हम जिक्र करते हैं, इसकी स्टोरी जिक्र करते हैं. तो इसमें से जो ड्राइवर था इसका नाम था दीसा, और जो एलिफेंट था इसका नाम था मोती गज. मोती मीन्स पर्ल, मीन्स हीरा, और गज मीन्स elephant. So this was Moti Guj, who had bad, worse driver, Disa. Okay, he was the absolute property of his mouth. Look, this here, he has been used for elephant to personify, to highlight the effect of the story. And this is the story of an elephant and the story of the elephant owner or the elephant driver, Disa and Moti Guj. So he has been used here for this elephant in normal times, and in commonly we don't use he for an elephant. Commonly in English language it is used for animals, but here we are, this has been made particular and personified. Okay, a technique that I have already mentioned is called personification, in which non-humans are non-humans are attributed with the human qualities. This technique is called personification. Okay, he was absolute property, means it was complete. The Moti Guj was the complete property, means the whole property of his driver. The driver's name was Disa. Okay, Disa was a foolish drunkard. Now let's talk about, we are coming to the characterization of Disa. Who was Disa? How did he like? How did he feel? How did he think? What type of personality Disa had? Disa की personality कैसी थी? Disa के सोचने के अंदाज कैसे थे? और मोती गज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, और किस तरह मोती गज को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती थी. ठीक, दिसा वाज अ फूलिश, बेवकूफ़ था, ड्रंकार्ड और शराबी था. बेवकूफ़, शराबी. एक तो पहले से ही बेवकूफ़, वैसे जो शराबी होगा वो कहाँ से दाना होगा, वो तो बेवकूफ़ ही होगा. तो देयरफॉर दिसा वाज अ फूलिश ड्रंकार्ड. व्हेन ही हैड मेड मच मनी, जब कभी वो कमाता था, अच्छी खासी कमाई हो रही होती थी उसकी, तो क्या करते? थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एलिफेंट, when he would exploit this elephant for gaining or earning money, a good amount of money, what would happen? तो क्या करता वो? He would get extremely drunk. तो वो बहुत पिया करता था, मतलब शराबी था तो पीना पड़ता था उसको. एंड गिव मोती गज अ बीटिंग, और उसके बाद वो उसको पीटता था. बीटिंग मतलब साउंड थ्रैशिंग देता था. विद अ टेंट पैग, यू अंडरस्टैंड, लाठी कैन, उससे उसको बहुत मारता था. किस पे मारता था? ओवर द टेंडर नेल्स ऑफ द फोर फीट, आगे के जो पैर हैं और उन पैर के क्लाउज या पंजे हैं, और उन पंजों पे उसको वो मारता था. ठीक, उससे क्या होता? मोती गज नेवर ट्रैम्पल द लाइफ आउट ऑफ दिसा ऑन दीज ओकेजन्स. लेकिन मोती गज इस पे कभी रिएक्शन नहीं दिखाता था. क्यों नहीं दिखाता था? एक तो उसको मार पड़ रही है, दूसरा वो कोई रिएक्शन नहीं, तीसरा वो बड़ा
बड़ा ताकतवर जानवर, और उस पर वो कोई रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, अब देखते हैं क्यों नहीं देता। ही न्यू, क्योंकि उसको पता था, किसको, मोती गज को, मीन्स एलिफेंट को, उसको पता था। ही न्यू दैट आफ्टर बीटिंग वॉज ओवर, कि जो ही ये मार पड़नी बंद हो जाएगी उसके बाद क्या, दिशा वुड एम्ब्रेस हिज ट्रंक, दिशा उसके बाद उसको पकड़ लेगा, गले लगाएगा उसका ट्रंक। हेयर, यहाँ का जो ट्रंक है ये हाथी के अगले वाले हिस्से को कहते हैं, मीन्स जो ये वाला होता है, ये वाला हिस्सा होता है, इसको ट्रंक कहते हैं। दिस इज द ट्रंक ऑफ द यू नो एलिफेंट। ये वो ट्रंक नहीं है, ये प्लांट वाला ट्रंक नहीं है। इसको भी ट्रंक कहते हैं, उसको भी ट्रंक कहते हैं, लेकिन दिस ट्रंक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ट्रंक। तो इस ट्रंक को पकड़ लेता और इसको गले लगाता, और गले लगाने के बाद व्हाट वुड ही डू, ही वुड वीप, उसके बाद रोता था, मतलब तौबा करता था। यानी उसकी बीटिंग के बाद वो तौबा करता था। तौबा क्यों, क्योंकि उसको फिर ये एहसास होता कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे इस जानवर को पीटना नहीं चाहिए था, लेकिन वो पीटता, इसकी आदत थी, वो करता। ही वॉज यूज टू दिस। ही वुड कॉल हिम हिज लव, उसके बाद तारीफें करता। क्या करता, ही वुड कॉल, उसको वो बड़े प्यार से पुकारता, यू आर माई लव, यू आर माई एवरीथिंग, एंड गिव हिम सम लिक्वर, उसके बाद उसको वो यही लिक्वर मीन्स शराब पिलाता, विच मोती गज वॉज वेरी फॉन्ड एट। एक्चुअली मोती गज भी अगर कोई चीज़, ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करता था, वो इसलिए बर्दाश्त करता था, उसको ये पता था कि आफ्टर बीटिंग आई वुड बी गेटिंग लिक्वर। लिक्वर जो है शराब है, और इस शराब को पीने के लिए वो इतनी सारी तकलीफ़ें झेलता था। ठीक है, तो आगे का इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इस वीडियो को अपलोड करने में टाइम लग जाता है, तो देयरफॉर विल लीव द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और इसमें जो अल्फाज हैं, आई शो यू, वो मैं अलग से इसको, these are the words that I have brought out from the lesson, जिनको आप PDF की सूरत में मैं आपको भेजता हूँ। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मीट डे आफ्टर टुमारो।